Hello viewers, today I am going to discuss F block of elements or inner transition elements. In case of F block of element, last electron of atom enters into F subshell of anti-penultimate orbit. Anti-penultimate मतलब second last orbit. Suppose outermost orbit is 6, then penultimate is 5 and anti-penultimate is 4. General electronic configuration noble gas n-2 anti-penultimate orbit के F सबसेल में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट n-1 के D सबसेल में 0 to 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन. F block of elements occur between two transition elements, group 3 and 4. So they are also called transition elements, inner transition elements. F block of elements are in two series. Cerium 58 to lutetium are placed with lanthanum, so called as lanthanoids. And thorium 90 to lawrencium 103 are placed with actinoids. Actinium in group 3 are called actinoids. Lanthanoids, these are F block of elements which are placed in 6th period of group 3 of periodic table along with lanthanum. Electronic configuration सबका दिया हुआ है. S ऑर्बिटल में आउटर मोस्ट और कैसे कॉन्स्टेंटली 2 इलेक्ट्रॉन है. D सबसेल में 0 और 1 है. जब हाफ फिल 7 है तो यहाँ D1 हो गया. ये याद करना पड़ेगा आपको, नेम इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. Effective nuclear charge in atom arises due to electrons of outer two orbits, the electrons having shielding effect less than 1. So in a period, number of electrons in outer two orbits and electrons in F subshell having shielding effect less than 1 increase कर रहा है, तो shielding effective nuclear charge will increase in a period with increase in atomic number. Atomic radius. In lanthanoid series, outermost orbit number remains same and effective nuclear charge increases with atomic number, which is just decrease in atomic radius. With atomic radius decreases with increase in atomic number. This is called lanthanoid contraction. Oxidation state. All lanthanoids form ionic compound in +3 oxidation state consisting M3 plus ion. Some lanthanoids, very few, also form M2 and M4 plus, but they are always less stable than M3 plus. M2 plus and M4 ion consist of F0, F7 and F14. कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. Ionic character of compound in lanthanoids +3 oxidation decreases and covalent character increases in a series with increase in atomic. Left to right, ionic character decrease करेगा, covalent character increase करेगा. Properties. All lanthanoids are silvery white metal and their hardness increases with increase in atomic number. Samarium being a steel hard, steel की तरह hard होता है. All lanthanoids have high density and density increases with increase in atomic number. A very important point. Lanthanoids are less electropositive than S block and more electropositive than P block aluminum and D block of aluminum. So a more electropositive metal form more basic oxide and hydroxide. So S block का calcium more basic होगा than lanthanide का hydroxide than aluminum. And in the series, basic character decreases with increase in atomic number. Because lanthanides के reaction with water, HX and non-metals दिए गए हैं. Color of compounds. जिस तरह डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, यहाँ एफ ऑर्बिटल का भी स्प्लिटिंग होगा. एंड कलर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन सिमिलर टू ट्रांजिशन एलिमेंट डी डी ट्रांजिशन. सो इन ट्रांजिशन एलिमेंट D0, D5 and D10 are colorless. Similarly here F0, F7 and F14 are colorless and are other colored. एक important चीज 4Fn and 4F14 minus n having same number of unpaired electrons or have same color.
जैसे 4f2 एंड 412 सेम कलर का होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 4f0 एंड 4f40 डायमैग्नेटिक और बाकी पैरामेट्रिक होगा। ये कुछ यूज ऑफ लेंथेनॉइड्स है, प्रिपरेशन ऑफ स्टील एलॉय प्लेट्स फॉर पाइप। मिक्स्ड मेटल कंटेन 95% ऑफ लेंथेनाइड्स, ये क्वेश्चन पूछा है। Mg based alloy lanthanides are used in bullets. Lanthanide used as catalyst. Actinoids. These are F block of elements placed in seventh period, group 3 of seventh period along with actinium, so called actinoids. Electronic configuration. These are radioactive elements. Earlier शुरू के जो एलिमेंट थे वो उनका हाफ लाइफ लॉन्ग होता है, बट लेटर वन हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ एंड वेरी हाईली रेडियोएक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिमिलर टू लेंथेनॉइड पीरियड में इंक्रीज करेगा due to increase in number of f electrons in inner subshell having poor shielding effect. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, इसे एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट, एक्टिनोइड्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट and the stability of compound increases with increase in atomic number. एक very important point. Actinoids show greater multiplicity of oxidation state in first half. Lanthanoid के फिक्स थे +3 और कुछ +2 एंड +4 कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट काफी वेरिएबल होगा, खास करके फर्स्ट हाफ सीरीज में, ड्यू टू energy difference between 5f, 60 and 7s orbitals in actinoids are smaller in comparison to 4f, 5d and 6 s orbitals in lanthanoids. So actinoids form compounds in higher oxidation like +4, +5, +6 and +7. Second half of series ये डिफरेंस बढ़ जाएगा, इसलिए वहां मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। Compounds in +3 and +4 oxidation are readily hydrolyzed. Properties: all actinoids are silvery vital. Actinoids are more electropositive than lanthanoids and less electropositive than calcium. मतलब टोटल सीरीज देखें तो S block, then actinoids, then lanthanoids, then D block and P block. All actinoids have highly reactive metals and finely divided states. All metal reacts with dilute HCl becomes passive in conc HNO3, formation of protective layer. All metal react with boiling water to form oxide and hydroxide. Metal react with non-metal like. These are strongly paramagnetic. कंपैरिजन है +3 स्टेट दोनों में आएगा, लेकिन यहाँ वेरिएशन ऑफ अदर ऑक्सीडेशन बहुत कम होंगे, इसमें ज्यादा होगा। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लेस बेसिक, मोर बेसिक, लेस कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग। एक्सेप्ट प्रोमेथियम ऑल आर नॉन रेडियोएक्टिव, यहाँ सभी रेडियोएक्टिव। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। सब्सक्राइब माय चैनल and press bell icon to get proper notification.